अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है IQ स्टार एजुकेशन पे। इस वीडियो से हम अपने बीएससी के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम zoology के स्टार्ट करने वाले हैं विद द सेल बायोलॉजी। स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग एजुकेशनल वीडियोज़। तो आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के ये चैप्टर्स देखने वाले हैं। द फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, शेप्स ऑफ सेल, सेल की जो चार डेफिनेशन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ सेल देखेंगे जिसमें आते हैं ये 9 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, that is cytology, cytotaxonomy, cell physiology, cytopathology, cytochemistry, molecular biology, cytoevolution, cytoecology and cell culture. So let's start. फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेल। सेल का मुझे आई डोंट थिंक सो आपको बताना पड़ेगा दैट इट इज़ द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। वी कैन से दैट विदाउट सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म इम्पॉसिबल है बनना। We can say all living organism from the smallest protozoan that is amoeba to the largest animal that is blue whale, including plants too. All living organisms are made up of cell, and the study of cell is known as cytology. So first it was discovered by Robert Hooke in 1665. तो इसके पीछे एक यूनिक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट रॉबर्ट हुके ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। उसके ऊपर उनने उनकी एक बुक भी लिखी थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिस्कवर करने के बाद उसने एक कॉर्क कैम्बियम का पीस लिया था and he put that under a compound microscope. He observed that there are tiny spores which are resembling to the house of bees was seen under the compound microscope and he named them as cell. So रॉबर्ट हुके ने फर्स्ट सेल को डिस्क्राइब किया था एंड उसके ऊपर उसने बहुत सारे थियरीज भी अपने प्रपोज किए थे। नॉट ओनली रॉबर्ट हुके बट ऑल्सो वेरियस साइंटिस्ट हैज described their theories on the cell. So that was the story behind the cell. We also know that there are two types of cell, unicellular and multicellular. वही चीज़ें हैं that uni means one cell, multi means more than one cell. We can see there are two types of cell, prokaryotic and eukaryotic, which are the main types. That prokaryotic हम याद रख सकते हैं, pro means पुराने वाले and u means नए वाले। प्रो से हम याद रख सकते हैं that they don't contain nucleus and other cell organelles, but eukaryotic contains all the cell organelles. इसके हम डिटेल में स्टडी अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर करने वाले हैं। As I have mentioned earlier that all living organisms including plants are made up of cell. So plant cell and animal cell की डिटेल में स्टडी हमें है and we are going to see that प्लांट सेल में 2-3 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट विच हेल्प्स देम इन द फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। सो हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल तो हो गया। अब आते हैं हम हमारे शेप्स ऑफ सेल पे। The first shape is the variable that is constantly changing shape, जो कि amoeba and leukocyte जैसे protozoans show करते हैं। They are displaying variable shapes. They are changing their shape constantly. That's why they can do phagocytosis. So they are changing their shape continuously. अब आते हैं फिक्स शेप पे जिसमें कि आते हैं ये सारे टाइप्स। क्यूबॉइडल शेप, as you can see, as in the name states, they are cuboidal in shape. They contain the cells of squamous epithelium, endothelium, thyroid gland, and the upper layer of epidermis, etc. As you can see in the picture of that is present in the right hand side of the corner. Second type is the columnar shape, that is the cells lining the intestine. They are column-like shape. Then contain the discoidal shape, and the example is the RBC, that is the red blood cells of many vertebrates. So RBCs जो होते हैं वो discoidal shape के होते हैं. Next type is the spherical, with there are eggs of the many cells which are spherical in shape. Then the spindle shaped, this like the smooth muscle cells which are elongated, and the spindle. Then contains the elongated, which contains the nerve cell that are present in the brain.
So they are elongated in shape, and the last type is the branched, which present in the pigment cells of the skin. As you can see in the picture that the cell is branched. Our next topic is definition of cell. तो सेल को डिफाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एज सेल को समझने के लिए हमें उसकी डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेफिनेशन सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक वो वेरियस functions perform करता है. That's why it is said that it is a structural and functional unit of living organism. Second definition, cell is the smallest living unit capable of independent existence. It is the smallest living unit which is capable of independent existence. As we all have heard कि जब बहुत सारे cells आते हैं तब tissue बनता है, बहुत सारे tissue आते हैं तो organ बनता है, बहुत सारे organ आते हैं तो system बनता है and that leads to an organism. तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एक सेल था सो वी कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट विच इज कैपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट. सो थर्ड डेफिनेशन देखते हैं. Cell is the smallest mass of living matter protoplasm containing nuclear material. So it is the smallest living matter protoplasm. We can also say it is the cytoplasm, which contains nuclear material. Nuclear material में आते हैं DNA, RNA, nucleic acid, protein, etc. So it contains the nuclear material. Our fourth definition, so it is related to the third. तो हम बोल सकते हैं थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन में थोड़ा ज़्यादा रिलेशन है. Cell is a piece of nucleated cytoplasm surrounded by a cell wall or plasma membrane. Again, it is a piece which contains nucleated cytoplasm. Nucleated cytoplasm means nucleus contain है, nucleus में वही आता है nuclear material that is DNA, RNA, etc. So which is surrounded by a cell wall or plasma membrane. Cell wall plants में present होता है but in animal cell there is only plasma membrane. So ये हो गए definition cell के. अब आते हैं इसके branches पर. The first branch is the cytogenetics. So first of all it is a branch of cytology we can say which deals with the cytological and molecular basis of heredity, variation, mutation, morphogenesis, differentiation, evolution of chromosomal behavior of organism. ये सब क्रोमोसोम के बिहेवियर जैसे कि है हेरिडिटरी which is the transfer of genes, transfer of characters from one generation to another generation, variation, mutation, cell division, evolution, etc. are all studied under cytogenetics. So it also proved the theory of continuity of germ cell. This cytogenetics also proved the theory of continuity of germ cells which explain the transmission of hereditary characters. तो इसका knowledge has been useful in the identification and synthesis of hereditary material. Genetic code को crack करने के लिए भी useful होता है and also superior qualities के जो crop है उन्हें बनाने के लिए इसका knowledge बहुत useful किया गया है. Also जो genotypic and phenotypic expressions होते हैं वो सब साइटोजेनेटिक्स के स्टडी के अंदर आते हैं. जेनेटिक कंट्रोल होता है ग्रोथ का एंड ऑल्सो द रोल ऑफ जीन्स इन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. ये सब साइटोजेनेटिक्स में यूजफुल है. सो ओवरऑल साइटोजेनेटिक्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर. तो अब आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी पे जो कि है सेकेंड ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी. First of all, cytotaxonomy name में ही है cytotaxonomy, that is cytology in taxonomy है. तो first of all it helps to find that every species जो कि होती है हो सकता है plant की हो या animal की हो, they all have a definite number of chromosome. अब definite number of chromosome है इनके cell में means they have a similar to one another in terms of its size, shape, habitat and behavior. Also, it also helps in understanding the origin of certain taxonomical unit. So it also helps in understanding the origin of certain taxonomical unit and hence helps in determining the taxonomical position of any species, that a particular species is in the particular taxon. Our third type is the cytophysiology.
Now cytophysiology also physiology है name में ही बस it deals with the study of life activities in the cells such as nutrition, metabolism, growth, reproduction and cell differentiation in the cell. So तो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ की स्टडी इस सेल फिजियोलॉजी में की जाती है जैसे कि है न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन एक्सेट्रा. So thus it has helped in understanding various complicated physiological activities. Our next type is the cytopathology. Name ही है, it's the combination of cytology as well as pathology. तो वही है pathology में जैसा diseases की study करते हैं, same in the case of cell कि ये cells के जो various diseases है that are caused due to abnormal activities of the cell or tissue and toxic chemical like cancer cells and the effect of toxic chemicals on tissues are studied under cytopathology. So of course cytology and pathology से मिला हुआ है तो they show a close relation in between them and it is useful in understanding various diseases of animals. Our next type is cytochemistry. So in cytochemistry, the study of physiochemical and chemical composition of living matter is studied. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि cell contains nuclear material like DNA, RNA, nucleic acid. So ये सब का स्टडी साइटोकेमिस्ट्री में होता है. सो साइटोकेमिस्ट्री इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ carbs, proteins, lipids, nucleic acid and other organic inorganic compounds that are present in a cell. Our sixth type is molecular biology and ultrastructure. This branch deals with the ultrastructure of cell organelles जो कि है cell organelles, cell membrane है, molecular organism है with respect to electron microscopy. So electron microscopy के help से ultrastructure की study करने में help करता है. So first of all it is a branch merging of cytology with biochem, physiochem and micromolecule. Biochemistry, physiochemistry and micromolecule को merge करके ये branch cell का बना है, cytology का बना है. So study of this is of fundamental important because all functional and physiochemical transformation takes place at the molecular level only. Our seventh type is cytoevolution. Name में ही है evolution means ये evolution की study करता होगा. But हम देखेंगे कि radiant energies like X-rays and gamma rays and some chemicals such as carbon 60 can change the structure and number of chromosome in the cell. तो इससे evolution होता है and evolution की study हम cyto evolution ये branch से कर सकते हैं. Our eighth type is cytoecology. Ecology means वही it deals with the effects of ecological changes on the chromosomal number of cell. That is we can see animal and plant cell की स्टडी कर सके हम इंडिकेट कर सकते हैं देयर रिलेशन कि वो ऑर्गेनिज्म अपने आप में कैसे रिलेशन रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स इकोलॉजिकल हैबिटेट एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Our last type is cell culture and in vitro. So it is used for understanding basic cell biology. You can say DNA replication क्या होता है, transcription, translocation, protein synthesis, energy metabolism, cell division, gene expression, etc. These are all basic cell biology which are studied under cell culture. Or it is also used to understand the diseases which are related to cell and better. It is also used to understand somatic cell genetics for mapping genes on chromosome and for the development of antibiotics. Cell culture, study of cell culture has been useful. तो एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या देखा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल के बारे में पढ़ा that cell is a basic and smallest unit of life. Study of cell is cytology. इसको किसने डिस्कवर किया था, that is रॉबर्ट हुके ने. उसके बारे में हमने स्टोरी भी देखी एक. We have also seen the prokaryotic and eukaryotic cell and with that we have seen the shapes of cell, that there are two types of cell shapes. उसमें भी हमने सब types देखे उसके. Then we have seen the four definitions of cells which were very important in the exam point of view.
Then after that we have seen the branches of cell, that is cytogenetics, cytotaxonomy, cytophysiology, cytopathology, cytochemistry, molecular biology, cytoevolution, cytoecology and cell culture. तो ये सब टॉपिक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके डायग्राम कैसे है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो इट्स रिडल टाइम। अगर आपको इस रिडल का आंसर आता है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो रिडल इज, what has to be